নমস্কাৰ। আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সাক্ষী যিটো পয়েম সন্ত কবিৰ দাস জীয়ে যিখন লিখিছিলে। এইটো দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইটো কবিতাটো যদি পঢ়িছে তেনেহ'লে নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু মই তাৰে কিছুমান বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি লৈ আনিছোঁ। গোটেইখিনি অনা নাই। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মুখস্থ যদি কৰিলে এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। আৰু আপোনালোকে মই আশা কৰোঁ যিদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছে ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যেতিয়া মই এনেদৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্স ভিডিঅ'খিনি দিম যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখিনি লগতে পায় আৰু ভিডিঅ'খিনি চাই আপোনালোকে উপকৃত হওক বুলি আশা থাকিল। আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত সন্ত কবিৰ দাস জীয়ে লিখা সাক্ষী পয়েমটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, পঢ়ি দিছোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। कबीर दास जी के कविताओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। संत कबीरदास जी के कविताओं में हमें विविध विषयों के अनमोल ज्ञान एवं अमूल्य संदेश निहित मिलते हैं। आत्मा के रूप में व्यक्ति के भीतर परमात्मा की स्थिति, सद्गुरु की महिमा, गुरु शिष्य का संबंध, मानसिक शुद्धि की आवश्यकता, आत्मनिरीक्षण की जरूरत, महान साधना एवं कर्म की आवश्यकता आदि विविध बातें उनकी कविताओं में देखने को मिलती है, जो उनकी लोकप्रियता के कारण बना है। क्वेश्चन नंबर 2, कबीरदास जी का आराध्य कैसे थे? उत्तर, संत कबीरदास जी के आराध्य निर्गुण और निराकार थे। वे संसार के कण कण में बसने वाला, प्रत्येक अणुपरमाणु में रहने वाले निर्गुण निराकार राम की आराधना करते हैं। उन्होंने अपने आराध्य के बारे में कहा था, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात उनका राम दशरथ पुत्र नहीं बल्कि सारे संसार में रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तेरा साईं तुझ में जीव पुहपन में बास का आशय क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फूल में सुगंध विद्यमान रहता है उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर ही ईश्वर का निवास है। उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की तथा बाहरी दिखावे करने की जरूरत नहीं होती। आमी 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं? संत कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य को कुम्हार और घट के साथ तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार घट बनाते समय भीतर अपना हाथ डालकर उसकी त्रुटियां निकालता है तथा बाहर अपना हाथ सहारा देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के मन से बुराइयों को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, चाहे उसके लिए गुरु को अपने शिष्य को चोट ही क्यों न करना पड़े। अर्थात बाहर कठोर होते हुए भी गुरु अपने शिष्य को अंतर्दृष्टि प्रकार कर बुराइयों को दूर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन, भक्त कवि कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। এনেদৰে লিখিব, আপোনালোকে গোটা মাৰ্কছ পাব, ইয়াত নম্বৰ কাটাগৰি নকৰিব। संत कबीरदास जी की साहित्यिक परिचय। हिंदी के जिन भक्त कवियों की वाणी आज भी प्रासंगिक है उनमें संत कबीरदास जी अन्यतम है। उन्होंने हमारे जैसे साधारण जनता के बीच रहकर सरल सुबोध भाषा में जनता के लिए उपयोगी काव्य रचना की। उनकी कविताओं में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवतावादी दृष्टि का प्रकाश हुआ है। संत कबीरदास जी कर्मयोगी जुलाहे का काम करते करते अपने निर्गुण निराकार आराध्य को गीत गाया करते थे। महात्मा कबीरदास की रचनाएं बिजक नाम से प्रसिद्ध है। ये आपलोगे शॉर्ट क्वेश्चन लिखिब पारिब, जेतिया आहिब कबीरदास जी की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है, बिजक नाम से लिखिले आपलोगे 1 নম্বৰ लाभ करिए पारिब। इसके 3 भाग है, केतियाबा यार भागखिनि लिखिबले आहि जाय, गतिके मैं इते इनक्लूड कर दिसो। आपलोगे मुखस्त कर धुनियाके लिखिब पारिब साक्षी शब्द और रामायणी। भाषा पर कबीरदास जी का पूरा अधिकार था। उनकी भाषा तत्कालीन हिंदुस्तानी है।
जिससे सधुकरी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषय उनकी रचनाओं में अत्यंत सुबोध एवं स्पष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार की उनकी साहित्यिक परिचय थी। এতিয়া ব্যাখ্যা কৰা ইয়াতে 5 নম্বৰ আহে। ইয়াতে মই শ্বৰ্টকৈ লিখিছোঁ, দুটা লাইন আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় কবিতাটো পঢ়িছে, তেনেহ'লে গম পাইছে যে লাইন দুটা আছে, কিন্তু ইয়াতে শ্বৰ্টকৈ লিখা আছে। মই কিতাপৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি কিতাপ ৱাইজ দিছোঁ। মই ইয়াতে ইয়াৰ লাইনটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ আপোনালোকক। ক নম্বৰত আছিলে, जाति न पूछो साधु की, ইয়াতে লুকাই আছে, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, পৰা रहने दो জ্ঞান। অৰ্থাৎ আমি জাতিৰ বিষয়ে কেতিয়াও কোনো লোকৰ মানুহৰ বিষয়ে আমি জাতিৰ বিষয়ে সুধিব নালাগে, অকল তেওঁৰ জ্ঞানৰ বিষয়েহে আমি সুধিব লাগে। যেনেধৰণে আমি পণ্ডিতৰ জাতি পাতি সুধিব লাগে, তেওঁৰ জ্ঞানখিনি আমি অৰ্জন কৰোঁ। যেনেদৰে আমি তলুৱাৰ এখন কিনিব গ'লে আমি তেওঁৰ যিখন মুখা, যিখন খাম, আমি সেইখন আমি নাচাওঁ আৰু তাৰ ভিতৰত তলুৱাৰটোহে চাওঁ আমি যে ভাল আছে নে নাই, সেইটোৱে কৈছে। তাৰ আমি কভাৰটো কেতিয়াও চাব নালাগে। এতিয়া তাৰ বিষয়ে ইয়াতে ৰচনা কৰি ধুনীয়াকৈ মই লিখি দিছোঁ। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत संत कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी नामक कविता से ली गई है। संदर्भ कवि कैसे, प्रकृत साधु की जाति के बारे में न कहकर ज्ञान के महत्व के बारे में कहा है। व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रकृति साधु की जाति के बारे में नहीं बल्कि ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जात पात तो बाहरी दिखावा आडंबर है, ज्ञान से ही लोग महान बनता है। जिस प्रकार तलवार को ही सब लोग मोल देते हैं, चाहे उसका म्यान कितना ही सुंदर क्यों न हो, उसके बारे में कोई नहीं पूछता, उसी प्रकार साधु को भी ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनके जाति को नहीं। संत कबीरदास जी यहाँ जात पात को विरोध करते हुए ज्ञान को महत्व दिया है। আকৌ খ নম্বৰ আমি আৰু এটা ব্যাখ্যা কৰিম। ঠিক তেনেদৰে আছে, ইয়াতে দুই শাৰীৰ ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিব দিছে। कल करे सो आज करे सो अब, पर्ल में प्रलय हुएगा, बहुरी करोगे कब। प्रसंग, उत्तर से प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत संत कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी नामक कविता से ली गई है। আপোনালোকে যিয়ে নকৰক, যিমানখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিব, সকলোৰে স্टार्टिंगটো এনেকৈ আপোনালোকে দিব লাগিব। संदर्भ, वर्तमान को महत्व देते हुए कवि ने समय के काम को समय पर करने के लिए कहा है। व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम अभी अर्थात वर्तमान में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। क्षण भर में ही प्रलय आकर सब कुछ नष्ट कर सकता है, तब हम लोगों को करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात हमें कभी भी अपने कर्तव्य को टालना नहीं चाहिए, बल्कि समय रहते ही उसका समापन करना चाहिए। कबीरदास ने यहाँ कर्मयोगी का उपदेश देते हुए आलस्य भार को त्याग देने को कहा है। ভাষা এবং ব্যাকৰণ, এইখন আমি কবিতাটোৰ শেষৰ পিনে যিটো আমি ব্যাকৰণ পাওঁ, সেইটো ব্যাকৰণৰ বিষয়ে মই ইয়াত লৈ আনিছোঁ। এইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু পৰীক্ষাত এইখিনিৰ ভিতৰৰ পৰাই আহে। এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি যদি আপোনালোকে মুখস্থ কৰে, ইয়াৰ পৰাই আহিব পৰীক্ষাত আৰু বেলেগ নাহে। তৎসম ৰূপ লিখো। 1 নম্বৰত আছিলে পুহুপ। এতিয়া পুহুপ মানে পুষ্প। নদী, ইয়াতে আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নদী আৰু এটা আছে নদী, কিন্তু এইটো নদীটো আমি দেখিছোঁ যিটো আমাৰ সাগৰ বুজায়, আৰু এইটো নদী মানে যিকোনো বস্তু নিদিয়াটো, এইটো ন আৰু স্পেচ দি অকণ দি আছে নদী। নদী মে বাঢ় আই হে, আৰু এইটো নদী মানে হৈছে নদী, উছনে মুঝে কলম ন দি, মানে তাই মোক কলমটো নিদিলে। ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো 2 নম্বৰ পাইছোঁ লিংগ নিৰ্ধাৰিত কৰোঁ। ইয়াত আমি লিংগটো চাই উলিয়াব লাগে যে কোনটো পুল্লিংগ আৰু কোনটো স্ত্ৰীলিংগ। পুল্লিংগ, স্ত্ৰীলিংগ। চোট, পুল্লিংগত আমি পাইছোঁ চোট,
লোচন, জ্ঞান, ঘট, প্ৰেম। স্ত্ৰীলিংগ মহিলা, চাঁচ। আমি স্ত্ৰীলিংগটো মাত্ৰ আমি ইয়াত দুটাহে পাইছোঁ। এইটো আছিলে আমাৰ লিংগ নিৰ্ধাৰিত কৰাটো। এইখিনিলৈকে আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া আমি শেষৰটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আমি এইটো যে চাম। দো পৰ্যবাচী শব্দ লিখো। মই এইখিনিতে কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দিছোঁ আৰু সেই লিংকটোত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ স্পষ্টকৈ পৰ্যবাচী শব্দৰ বিষয়ে। এতিয়া বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা ডাউট থাকে যে পৰ্যবাচী আৰু সমাৰ্থক শব্দ একে নে বেলেগ বেলেগ। তেওঁলোকক মই ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে হয়, পৰ্যবাচী আৰু সমাৰ্থক শব্দ দুইটা একেই। যদি বিপৰীত শব্দ যদি আমাক সোধে যে এইটো সুধি থাকে যে পৰ্যবাচী মানে কি বিপৰীত শব্দ নেকি? নহয়, বিপৰীত শব্দক বিলোম শব্দ বুলি হিন্দীত কোৱা হয়। এতিয়া আমি দুটাকে ইয়াত আমাক পৰ্যবাচী শব্দ লিখিব দিছে, হয়তো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত পৰ্যবাচী নিদিয়াত সমাৰ্থক শব্দ বুলি দি দিব। গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও ভয় নাখাব, ধুনীয়াকৈ পৰ্যবাচী শব্দই লিখি আহিলে আপোনালোকে নম্বৰ লাভ কৰিব। ছাই হ'লে ঈশ্বৰ পৰমাত্মা। পানী জল আৰু নীৰ, ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ। ঠিক তেনেদৰে পৱন বায়ু হাৱা, ফুল পুষ্প কুসুম। তাৰপিছত সূৰ্য দিনকৰ ৰবি, গগন আকাশ অম্বৰ, ধৰতী ধৰা পৃথিৱী। আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি শিকিলোঁ। সাক্ষী কবিতাটোৰ বিষয়ে শিকিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো লিখি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব বা লিখি মুখস্থ কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আহিব পৰীক্ষাত, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভেৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ। যদি আপোনালোকক এনেধৰণৰ কিছুমান যদি আৰু যদি কুৱেশ্যন আনচাৰ লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কুৱেশ্যন আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু মোৰ চেনেলটোত যিসকলে নিউ আছে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাবলৈ। ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে।